everyone. Here in this video, I am going to discuss about different types of pencil sketch. मतलब while making a pencil shading drawing, कौन से types of sketches हम लोग use करते हैं, I am going to discuss a detail about that in this video. Okay, so let's start with the first type. So our first type is hatching. Our first type is hatching. Hatching. Okay. So hatching means we have to do straight lines. In hatching, what we have to do? We have to do straight lines. You can do it diagonally. You can do it slipping. You can do it standing lines. But you have to do straight lines only. Okay. See like this. So our next type is contour. Contour. It's contour. So in contour, we did curved lines. In hatching, we did straight lines, right? In contour, we have to do curved lines. That can be vertical, that can be horizontal, no issue. But you have to do it curved lines only. Okay, so we understand contour. So our next type is, our third type is cross hatching. CROSSHATCHING. It's cross hatching. Okay, cross hatching is similar like hatching. We have to do straight lines first. From one side you have to do straight line first, and then we have to do cross lines on it. And the whole process you have to do with straight lines only. ठीक है, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करना है. क्रॉस हैचिंग में सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करना है. वाइल डूइंग द क्रॉस लाइन्स स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करना है. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज क्रॉस कंटोर. सो क्रॉस कंटोर इज सेम लाइक क्रॉस हैचिंग. क्रॉस हैचिंग में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन्स, राइट. क्रॉस कंटोर में वी आर गोइंग टू यूज़ कर्व लाइन्स. सेम क्रॉस हैचिंग की तरह है, क्रॉस लाइन्स बनाएंगे, बट वी आर गोइंग टू डू इट विथ कर्व लाइन्स. कर्व लाइन्स से हमें बनाना है. सी लाइक दिस. Okay, so now you understand fourth type. Now the fifth type is circles. 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 Okay, सर्कल में जो शेडिंग है वी आर गोइंग टू डू इट विथ सर्कल्स ओनली. अब देखो, सिर्फ हम लोग सर्कल बना रहे हैं. शेडिंग के लिए सिर्फ हम लोग सर्कल ही बना रहे हैं. ओके, वी आर नॉट डूइंग स्ट्रेट लाइन्स, वी आर नॉट डूइंग कर्व लाइन्स, वी आर नॉट डूइंग क्रॉस लाइन्स एंड ऑल. वी आर डूइंग सर्कल्स ओनली. सो पूरा शेड आपका सर्कल से बनेगा. नाउ द सिक्स्थ टाइप इज रैंडम लाइन्स. ओके, यस, रैंडम लाइन इज सेम लाइक सर्कल्स. ठीक है, सर्कल की तरह ही है, बट रैंडम लाइन में हम लोग ना कैसे भी लाइन्स बना सकते हैं. सर्कल्स में कैसा होता है? सर्कल्स में यू हैव टू डू सर्कल्स ओनली, बट इन रैंडम लाइन यू कैन डू एनी लाइन्स, यू कैन मेक एनी लाइन्स, यू कैन डू एनी शेडिंग. गॉट इट? कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, नाउ द सेवेंथ वन इज योर चॉइस. Seventh one is your choice. Your choices look like a pattern. Say, have a look. First you have to do standing lines, then slipping line, then again standing lines, then again slipping lines, and the pattern continue. Most of the time we use this your choice a little bit on the trunk of the tree, a little bit on the roof of the house, a little bit on the cloths as well. ठीक है, उसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दैट्स योर चॉइस. योर चॉइस हम लोग उतना ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं.
Okay, now the eighth one and the last one. Okay, basically there are 8 types. So the last one is stripling. Strippling. It's stripling. Stripling means dotted lines. Sorry, it's dots only. Okay, it's not dotted lines. You have to make dots. See, like this. The whole drawing you have to do on dots only. Whole drawing you have to do with dots only. So those are the 8 types of pencil sketches. Fine. अच्छा, anyone, if anyone, any issue, कुछ भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग दिस वीडियो, अगर कहीं पे कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम लगे, you can directly write on the comment section. Thank you. Our next video will be on different types of pencils and their uses. So hope everyone liked this video. If you like this video, then do subscribe this channel, and if you want some videos on some particular topic, then can comment on the below comment section. Thank you. Stay happy, stay safe.